something जो हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे to bring it to all of you guys. Now, as far as the Crayons School is concerned, yeah, I would want to first start with early childhood market. हम लोग early childhood market में invest क्यों करना चाह रहे हैं, especially in the franchisee business 2021 में. Now, early childhood market के अंदर up until now अभी तक 3 to 5 years of age ही आती थी. Having said that, what the government recently did was कि early childhood market का जो scope है, now it is between 3 years of age till 8 years of age. So the best part is जो business हमारे पास target audience थी पहले, it has almost doubled now. The population of kids की अगर हम बात करते हैं, so up to the age of 6 ही अगर हम लेते हैं, so it was 13%, totaling up to 18.2 crores. अगर हम up to the age of 8 लेते हैं तो हमारे पास roughly around 25 crores के आसपास का target market है. In fact, recently अभी एक study 2 months back Forbes के द्वारा की गई थी, जिसमें early childhood की market was roughly around 30,000 plus crores. So 30,000 plus crores का, even if you tap the 0.001% market, that is ideally what we are looking at. So the Indian preschool market 2019 की अगर हम बात करते हैं, although 2021 में market scenario is absolutely different, it is recovering very very speedily now, and the good thing is कि market में correction आया है. अगर हम 2019 तक देखते हैं तो there was a lot of saturation, जहाँ पे franchisee based brands तो थे ही थे, but standalone brands भी बहुत सारे थे, and they were just running because एक demand supply gap था market में, and they saw that they can fill a demand supply gap, and उन्होंने एक preschool खोला है, वहाँ पे 50 बच्चे आ गए, and then it happened. So what that did was, ideally एक preschool का size अगर हम बच्चों के context में बात करते हैं तो roughly around 100 plus रहना चाहिए है for it to be profitable and for it to earn back 1 lakh rupees a month. आपको महीने का कम से कम लाख रुपए आता रहे, roughly around 100 बच्चों के आसपास की strength रहनी चाहिए. 2019 तक, because of saturation in market, because of the demand supply gap, average preschool size became 30, 40, 50. And what the pandemic has done is, on the hindsight, जिन लोगों ने survive कर लिया है या फिर जो इस time में market में enter करना चाह रहे हैं, the good thing is market में काफी अच्छी खासी correction आ गई है, not just in terms of own schools. जो own schools थे उन्होंने obviously rented property पे थे, and majority of it was on rented property, and they have shut down by now. The good thing is, now if you're starting your journey in early childhood, you will have the demand supply gap in your favor. This is the time when you start your preschool, you can take that first mover advantage, and अगर आप इस time पे preschool खोलते हो, chances are very very high that by the time, I mean generally 2 से 2.5 महीने लगते हैं to start the discussion, and by the time the school is launched, तो उस 2 से 2.5 महीने में जब तक आप फाइनल करते हो अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को एंड पूरा सेटअप को, it will be almost November, and till March जब तक नया सेशन स्टार्ट होगा, there is a very very good chance कि आप लोगों के पास 100 बच्चे होंगे. Even before the first year sort of ends, you will be at a very good break even situation. So the preschool market is very very ripe to enter right now and to capitalize and get the first mover advantage. The third point that we have here is that preschool industry is expected to grow by 24%. Now 24% is a very very conservative number. 24% से कोई भी अगर industry grow कर रही है, that's a very good number. But as of now, because of the correction, अगर हम अगले 2 साल की growth की बात करते हैं, ये 5 साल का तो एक average है, but हम over a 5 year enter नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी franchisee खोलने की बात कर रहे हैं. तो अगर हम अभी franchisee खोल रहे हैं, the next 2 years की जो हम growth देखते हैं, that is substantially higher than the average of 24 years. So this is precisely September 2021. This is probably September, October is the time जब आप ideally एक preschool खोलने की planning आप start करनी चाहिए है. And by the time it's November, December, you should have launched your school. And by the time it's March, you should be looking at roughly between 50 to 75 admissions easily, which will, I mean, even before you complete 6 months, you will be beyond operational break-even. वो ब्रेक इवन वाले टर्म्स इन चीजों के ऊपर हम बाद में आते हैं, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप प्री स्कूल मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली द राइट टाइम wherein you should enter the early childhood segment. Now, one of the things that a lot of people over the past 6 months have been asking me that, see, I have मेरे पास 10-20 लाख रुपए हैं कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए आइडली. सो आपके पास 10-15-20 लाख रुपए अगर हैं,
You should ideally invest in a business जो आपको not just for 1 or 2 years but एक sustained period तक एक recurring income आपको लाके दे रहा है, and not just recurring income but profit at the end of the day. हमें सिर्फ turnover नहीं देखना, हमें profitability भी देखनी है. So this is where early childhood के अंदर not just in metro or tier 1 cities, अगर आप tier 2 cities में भी हैं, in fact अगर आप tier 3 cities में भी हैं, तो the growth of early childhood is very very good, especially because जो अगर हम ब्रांड्स की बात करते हैं जो अभी तक खाली टियर 1 सिटीज में थे, नाउ स्लोली एंड स्टेडली बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम इज इंक्रीजिंग, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ, अगर हम बात करते हैं 20 से 30 साल वाली जो एज ग्रुप है, जनरली जहाँ पे people get married off and by the time they are 30-32 they have their first child, and because generally both husband and wife are now working nowadays, what we see, तो दे हैव स्लाइटली हायर डिस्पोजेबल इनकम जो वो अपने बच्चे पे एजुकेशन के अंदर लगा सकते हैं. तो जब आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है जो आप एजुकेशन पे स्पेंड कर सकते हो, देन यू वुड वांट टू गो फॉर अ ब्रांड, बिकॉज एजुकेशन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न देती है, पर्टिकुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज वेयर द ब्रांड कम्स इन, जो एक नॉर्मल प्री स्कूल विदाउट द सपोर्ट एंड असिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड वो क्वालिटी एंड डिलीवरी नहीं दे पाते हैं, particularly over a period of time. So increased awareness is there. It is women centric. Women are now entering into the workforce, and the best part about early childhood is कि if I'm a woman today, तो I have flexible working hours. 9 बजे से मैंने काम करना शुरू किया, and by 2 or 3 o'clock I have wrapped up my school. By 3 o'clock I have wrapped up my school, and by 4 o'clock I'm at home. तो 4 बजे तक अगर as a woman I have both the flexibility. दिन में मैंने काम कर लिया, शाम को आके आई कैन टेक केयर ऑफ द हाउस एज वेल, एंड मैं बच्चों पे भी ध्यान दे सकती हूँ. सो अ लॉट ऑफ वर्किंग वुमेन आर एंटरिंग दिस वर्कफोर्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज आप किसी भी इंडस्ट्री में जब जाते हो तो आप तो काम कर ही रहे हो फ्रॉम अ बिजनेस ओनर पर्सपेक्टिव, लेकिन आपको ये भी देखना है कि एम्प्लॉयमेंट कितने आराम से वहाँ पे आपको मिल रही है, एंड क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट आपको कितने आराम से मिल रही है. सो द बेस्ट पार्ट इज वुमेन बाय डिफॉल्ट दे हैव अ केयरिंग नेचर, एंड इस सेगमेंट में आपको वर्कफोर्स से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आते. I think Rahul Sharma has raised the hand. Can we take a question from Mr. Rahul? Or are we taking questions in the end? Dear participants, please note down your questions in the chat box, and we'll take your questions later on as well. Sure. So yes, continue. Thank you. Yeah, sure. So subsequently there is minimum risk factor also. एट द एंड ऑफ द डे हमने पैंडेमिक में देखा बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहाँ पे कैश फ्लो बिल्कुल ही जीरो हो गया था. मतलब बिजनेस एक ऐसी चीज थी कि अगर कस्टमर नहीं आ सकता है तो आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, एंड काफी सारी चीजें शट डाउन भी हुई हैं. लेकिन प्री स्कूल एक ऐसी मार्केट थी जहाँ पे वेरी इजिली आपने पिवट कर लिया, आप ऑनलाइन पे स्विच कर गए, एंड ऑनलाइन क्लासेस हम देख रहे हैं चल रहे हैं. सो आर सेल्स राइट नाउ, अगर हम अपने ही ब्रांचेस की बात करते हैं, सो बिटवीन 2.5 to 5 years ऑफ एज इतने सारे बच्चे हैं बिकॉज ऑफ विच दे मिस्ड, स्पेशली जो शुरू के पैंडेमिक के 2020 की अगर हम बात करते हैं, बिटवीन मार्च टू सितंबर, बहुत सारे पेरेंट्स ने वो वाला गैप देखा उस पीरियड में. बट स्लोली एंड स्टेडली दे रियलाइज कि बच्चा स्पेशली एट दिस यंग एज, अगर हम 6 महीने साल का भी गैप लेते हैं तो उस 6 महीने साल का गैप कवर करने में बहुत डिले हो जाता है. एंड अ लॉट ऑफ पेरेंट्स केम टू अस जहाँ पे डिले की वजह से दे वर एक्चुअली रिग्रेटिंग. And now parents have realized कि early childhood के अंदर lockdown आता है चाहे नहीं आता है. The good thing is the general population now has experience and know-how कि अगर lockdown दोबारा भी आता है तो कौन सी चीजें compromise करनी है, कौन सी चीजें compromise नहीं करनी है. So 2020, mid of 2020 and end of 2020 एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे फिर भी एक स्केप्टिज्म था, लेकिन आज के दिन में मान लो अगर दोबारा भी लॉकडाउन आता है, द गुड पार्ट इज अर्ली चाइल्डहुड के अंदर देयर इज इनफ स्कोप एंड इनफ पोटेंशियल कि अगर आप खाली ऑनलाइन ऑपरेशंस भी चलाते हो तो आपके ऑफलाइन एक्सपेंसेस जो हैं, चाहे वो रेंट के हो या जो भी हो, वो आराम से मीटअप हो सकते हैं. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, लॉकडाउन आए ना आए, पैंडेमिक आए चाहे ना आए, मिनिमम रिस्क फैक्टर इज देयर बिकॉज एजुकेशन इज बेसिक नेसेसिटी. देन इट इज अ नो क्रेडिट बिजनेस जहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि एडवांस में कुछ सर्विसेज देनी है एंड बाद में फिर आपके पास कैश फ्लो आ रहा है. कैश फ्लो हमेशा एडवांस में आता है एजुकेशन के अंदर. सो फीस जो है, चाहे वो मंथ की हो चाहे क्वार्टर की हो,
डिपेंड करता है आप कंपटीशन आपके एरिया में कैसा है एंड आप किस सिटी में हो, टियर 1, टियर 2, टियर 3। लेकिन अगर आप टियर 1 सिटीज में हो एंड एक डिसेंट एक लोकेलिटी में हो, वेरी इजीली यू आर इन अ पोजीशन जहाँ पे इनफैक्ट आपके पास क्वार्टर का पैसा एडवांस में आता है, लेट अलोन एक मंथ का पैसा। एंड उस जब आपके पास कैश फ्लो होता है, अल्टीमेटली कैश फ्लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बेस्ट पार्ट, एजुकेशन के अंदर आपको वो इश्यूज नहीं आते हैं। देन राइज इन न्यूक्लियर फैमिलीज। टियर 1 सिटी एंड मेट्रो सिटीज के अंदर तो देर इज एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट ओपन अ प्री स्कूल, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर प्री स्कूल की तो एक डिमांड है ही है। बिसाइड्स दैट, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो बाय डिफॉल्ट एक डे केयर की डिमांड अपने आप आ जाती है। चाहे आप डे केयर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, कॉर्पोरेट्स के खुद के अंदर भी डे केयर खुलते हैं आज के दिन में। एंड इन एनी विच केस कॉर्पोरेट्स डोंट नेसेसरली क्रिएट अ डे केयर स्पेस इन देयर प्रेमाइसेस। वो जनरली नियर बाय जो प्री स्कूल्स होते हैं उनके साथ टाई अप करके, particularly branded preschools, not self-owned preschools. That is one thing to note. I mean, एक trust factor होता है for a corporate. So if it's a franchisee-owned business, so a lot of trust is there. And that is where if you open a preschool with the Crayons, you have that advantage. जहाँ पे you will have direct access to a lot of nearby corporates. We will be working on tying up with corporates. And जो daycare का एक inflow है from nearby offices, वो भी आपके पास आ रहा होगा. So rise in nuclear families is there, growing demand is there. Because of all these factors, आज के दिन में if you are lying around idle with 10, 20, 15 lakhs, early childhood for the next 5 years is poised to grow. So this is one industry wherein you should definitely consider investing. If not, even if you're very interested or you've made up your mind कि नहीं ऑटोमोबाइल में लगाना है या रेस्टोरेंट बिजनेस में लगाना है, या फिर रेस्टोरेंट बिजनेस, ऑल्दो जोमैटो एंड स्विगी का भी रिसेंटली आईपीओ खुला है. सो the big debate point is कि they're driving losses of thousands and thousands of crores. So restaurant business from the face of it बड़ा lucrative रखता है, लेकिन there is a lot of upfront credit जो वहाँ पे चाहिए होता है. And long story short, safety and security in it is not there. So एक अर्ली चाइल्डहुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है विच इज वेरी वेरी कॉन्जर्वेटिव फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट. अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आप ये कहते हो कि 20 लाख रुपए तो हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कल को बिजनेस डूब जाए तो 20 लाख रुपए चले गए तो कोई बात नहीं. अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अर्ली चाइल्डहुड इज वेरी वेरी सेफ टू ओपन. सो coming to why Crayons, I mean the backbone of Crayons and the foundation of Crayons School, Mrs. Moshmi Sinha is there with us. She's the founder and managing director of the Crayons School. She's been working continuously over the past 10 years in the early childhood domain. And going forward also, intentional teaching is something that Mrs. Moshmi Sinha has brought to the Indian shores. And I would want Moshmi ma'am to just give a brief description and take things from there. Moshmi ma'am, if you can just... Yes, thank you, Akshay. So I'm Moshmi Sinha. I'm founder director of the Crayons School, and we started this brand 3 years before, and now we are moving to the franchisees, and we are looking for the partners who can work with us, and we are dedicatedly working with the we love to work with our partners. And in my team, we have Mr. Akshit as a business development head and Ms. Priyanka as a academic head. She is also there with us today, and she will take the academic part of it. And the Crayons, if I talk about, is the first intentional teaching-based preschool chain in India. So we were the first school, and till now, I think we were the only one who are implementing the intentional teaching in early childhood education. And about intentional teaching, Priyanka ma'am will take over the slides. And recently, I have been awarded with Bharat Shiksha Ratna Award. And I'm very happy to share one more thing, that yesterday only, we have been nominated by ECDF, that is Early Childhood Education Forum. And we have an award function in September only, where we are getting the Best Preschool Chain India 2021 award also. So this is also one of the achievements which we are going to get in September only. Yes. Right. So these are a few awards which we have received last year during pandemic. Like we have been
we have been chosen as a best preschool chain in India by IIFPL Global Hallmark India Awards. And then we have the best innovative pedagogy preschools in Uttar Pradesh. That is why I'm saying कि हम पहला स्कूल है इंडिया में और अब तक का सिंगल स्टैंडर्ड स्कूल है those who are working on the intentional teaching based curriculum. Right. So these are some of the awards which we have got. And again in 2021-22, we are getting the best preschool chain. Because from the very first, 1st of April 2020, when the lockdown was announced, we started our online classes. So we were the first preschool chain in our locality to start with our online classes. We have actually, वो बहुत easy था हमारे लिए to convert into the online because पेंडेमिक के पहले ही हमारा स्कूल पूरा अपने आप को डिजिटलाइज कर रहा था. सो हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग मिल चुकी थी. सो वी आर वेरी इजीली वी आर एबल टू मूव इनटू द ऑनलाइन क्लासेस. So what is the vision of the Crayons School? Our vision is to make the education purposeful. बच्चा हमारे पास आता है, हमें लगता है कि that the old fashion has gone कि उसको हम ABCD सिखा रहे हैं, उसको हमने 1 2 3 सिखाया और बच्चा चला गया. No, the scenario nowadays has changed because parent को ये लगता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, एजुकेशन के साथ साथ वो वैल्यू एजुकेशन भी लेके आए. पेरेंट्स वर्किंग हैं, उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं. So it's very important that we should give them the value also about the school, about their locality, about their parents. So our mission is to provide a hygienic and a well defined curriculum, which for which our academic head is there. She is helping us out to create a curriculum, and we have introduced the NEP also. That is the new education policy which has been launched in 2021. So we have already हमने अपना जो curriculum है हमने NEP based अपना पूरा define कर लिया है. We have made our books according to the new education policy. So कहीं पे भी अगर हमारा स्कूल stand out करता है तो हमारे बच्चे कहीं lack नहीं करते हैं because we are into the path of new education policy. True. Now I will hand over this slide to Miss Priyanka. She is our academic head. So Priyanka ma'am, can you please take it over from here? Priyanka ma'am, are you there? I think she's there. Yes, Ms. Priyanka, now you are co-host. Please continue. Yes, thank you. sure. Thank you so much, everyone. And myself, Priyanka Singh. I'm academic head of the Crayons School. So if we talk about the intentional teaching, so first we'll I just want to introduce, we are working on the core values in the Crayons School. जिसमें कि हम काम कर रहे हैं, this is include with age appropriate, integrated learning and child centric. ठीक है, अगर हम intentional teaching की बात करते हैं, intentional teaching हर बच्चे को हमने सेग्रीगेट किया है इन डिफरेंट कैटेगरीज, जहाँ पे हमारे टीचर्स जो हैं दे आर प्री डिफाइंड विद स्पेसिफिक आउटकम्स एंड गोल्स इन देयर माइंड, right? So to raise the child development in certain areas, like in their ideas, in their needs, in their strength and interest. It's basically a pedagogy tool है ये, जहाँ पे हम बच्चों को एक सपोर्ट देते हैं लर्निंग के लिए. एंड अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम की एंड प्रैक्टिस की, तो इंटेंशनल टीचिंग इज नॉट अ वन गो प्रोसेस. ये हमने बच्चे को पढ़ा दिया और उसको समझ में आ गया, इस तरीके से नहीं. इट्स अ होल डे प्रोसेस. जैसे कि हम इंडोर एक्टिविटीज बच्चों के साथ में प्लान करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज प्लान करते हैं, इफ द किड्स इज गोइंग फॉर द टॉयलेटरी ट्रेनिंग एज वेल. सो इंटेंशनल टीचिंग जो है ये रैप्ड अप है in all the areas, in all the situation. It's help us out, right? And इसके अंदर जैसे कि हम प्लानर करते हैं अपने बच्चों का प्रिपेयर, इसके अंदर अप्रोप्रिएट रहता है ये, एंड कॉन्सेप्ट्स बेस्ड रहता है, राइम्स आर देयर, सर्कल टाइम इज देयर,
and teacher are asking more question from our kids. Teacher plan to foster engagement, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को engage किया जाता है activities के लिए, and sessions को हम extend करते हैं जानने के लिए कि बच्चा के क्या circumstances हैं, उनकी listening parts क्या हैं, उनकी एक्टिविटीज में कहाँ पे बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है. सो दिस इज अबाउट द इंटेंशनल टीचिंग, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज को कैटर करते हैं. दैट इज इंक्लूडिंग विद द ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, will nurture them with the multiple intelligence. हर बच्चे की एक अपनी कैपेसिटी होती है काम करने की, एक्टिविटीज करने की. So we'll make sure we'll nurture, our teachers nurture them कि बच्चे को कहाँ पे कितनी जरूरत है. This is about the intentional teaching. उतना उस बच्चे के ऊपर फोकस किया जाता है. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बच्चे की सोशल इमोशनल, कैसे बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना है सर्कल टाइम के अंदर. इस तरीके से हम इस हमारे जो 7 इंटेलिजेंसेस हैं पेडागोजी की, उसको हम कन्फ्रेन करते हैं. एंड दिस इज अबाउट इंटेंशनल टीचिंग. एंड वी आर सपोर्टिंग इन डिफरेंट वेज, जिसके अंदर हम एकेडमिक सपोर्ट देते हैं अपने सारे पार्टनर्स को, जिसमें वी आर प्रोवाइडिंग इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, and we are providing them videos, PPT, academic yearly planner is there, and monthly calendar and activity planner is there, and attraction of the month is there. We are giving the lesson plans to our teacher, we are giving them the trainings. So in sabhi tariko se hum support karte hain apne partners ko. And if we talk about the guidance and support in other terms, so we'll plan events also, celebrations also, and assistant program is there, orientation is also there. We are helping them with the orientation program, preparation for the formal school webinars, live sessions. इन सभी तरीकों से हम पार्टनर्स को और स्कूल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. So this is all about. So I'll request you to please Akshit can take over. Sure. Thank you, ma'am. Thank you for touching on the key points from the academic support as well as the difference in intentional teaching. Coming to the core thing, I mean, this is the Crayons leadership team. Mrs. Moshmi Sinha is our founder director. Priyanka ma'am is, as she was mentioning, the head of academics, and I'm looking after the franchisee expansion side of things. Now, थोड़ा सा बिजनेस को समझ लेते हैं कि अभी आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिटवीन 10 to 20 lakhs, वेयर इज दैट इन्वेस्टमेंट गोइंग, एंड वो इन्वेस्टमेंट से आपको रेवेन्यू कहाँ से आने वाला है. सो जनरली अगर हम आज के दिन में एग्जिस्टिंग प्री स्कूल मार्केट की बात करते हैं, या एग्जिस्टिंग ब्रांड्स सेटअप की भी बात करते हैं, या फ्रेंचाइजीज की बात करते हैं, प्री स्कूल बाय इटसेल्फ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम अपनी नंबर ऑफ वर्टिकल्स जिससे रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड करें. बाय डिफॉल्ट पैंडेमिक के अंदर जितने भी प्री स्कूल्स खाली प्री स्कूल पे डिपेंडेंट थे, या जो खाली प्री स्कूल एजुकेशन पे डिपेंडेंट थे, ऐसा नहीं है कि बंद हो गए, बट दे स्ट्रगल्ड अ लॉट बिकॉज खाली प्री स्कूल एजुकेशन पे डिपेंडेंट थे, एंड नॉट एवरीबडी हैड द डिजिटल मार्केटिंग नो हाउ कि हम ऑनलाइन एक्सपैंड करके एडमिशंस कैसे क्लोज करें या डिलीवरी कैसे दें ऑनलाइन क्लासेस की. So not everybody, particularly those who were single owned and single managed preschool branches, they struggled a lot. What we have done is we have diversified the risk. अगर आप एक preschool branch खोल रहे हो आज के दिन में, not only are you earning from जो preschool के बच्चे आपके पास आएंगे, but you will also have the Crayons Care, which is the daycare side of things. Now, particularly in tier 1 markets and metro cities, obviously, like in tier 1 markets, and in fact to some extent tier 2 markets also, there's a very good healthy daycare market. जहाँ पे what we have seen is, अगर हम metro cities की बात करते हैं, many a times बहुत सारी ऐसी branches भी हैं जहाँ पे daycare का revenue preschool के revenue से भी ज़्यादा है. So and एक बहुत basic calculation रहती है generally preschool industry में, एक daycare का बच्चा अगर पूरे दिन के लिए आता है तो that is as good as 3 से 4 बच्चे in the school. So ideally speaking, metro cities in tier 1, if you are in metro and tier 1, there is a very healthy market for Crayons daycare. उसके बाद हमने थोड़ा सा risk mitigate करने के लिए we have also introduced Crayons Academy, and there is a separate franchisee which is there on offer for Crayons Academy as well. अब Crayons Academy क्या है? Generally preschool का market अगर हम देखते हैं 3 to 5 years ही है, 3 to 5 के बाद बच्चा formal school में चला जाता है. Although the good thing is at Crayons we are not just there till 3 to 5, we have also expanded till class 1 and 2.
तो हमारे पास अपने ही करिकुलम में क्लास 1 and 2 भी डिजाइंड है. So if you have the space, generally एक preschool में 2000 to 2500 square feet की requirement रहती है. But if you have the space, roughly around 3500 4000 square feet, then you can also open a pre-primary or a primary school जहाँ पे हम class 1 and 2 तक भी extension लेके जा सकते हैं as per new education policy. लेकिन तब भी हमारे पास जो target audience है वो 3 से 8 साल तक की ही रहती है. जैसे और 8 साल तक में भी ऐसा नहीं है कि सारे ही बच्चे 8 साल तक हमारे पास continue करते हैं. There are parents जो 5-6 years की age में they will switch to a formal school. तो in that case, how do we ensure as a business कि हमारे पास एक recurring stream of income रहे and थोड़ा सा हम अपना target audience बढ़ा पाए. तो Crayons Academy के अंदर we have a lot of courses, music, art and craft, dance, yoga, Vedic maths, and there are other courses as well. I will touch on the courses in the subsequent slides. What happens is जितने भी 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं in the nearby vicinity, we can directly target them. And within the premises itself, we can provide these academy certification courses also. तो हमारा target audience अगर आप Crayons के साथ आते हो, you get a framework जहाँ पे आप सिर्फ 3 से 5 साल के बच्चों के साथ काम नहीं कर रहे हो, आप 3 से 18 साल के बच्चों तक का आपके पास एक target audience capture करने के लिए एक framework आपको मिल जाता है. And not just a framework, multiple franchisees what they will do is they'll just open a brand and continue करने के लिए operations आपको एक support मिलता रहेगा and that's it. At Crayons, it's like a bit of it is like Uber as well. Uber के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ऐप बना दी और आपको आप चलते रहो रोड पे, आपको सवारी मिल जाएगी, आप पैसे कमा लो और नहीं मिलेगी आप घूमते रहो. Uber is also giving you leads. Uber is directly giving you leads and directly giving you business, and from that business it's taking a small percentage out of it. Very similarly, at Crayons, whether it is the franchisee business, whether it's daycare, yeah, whether it's the academy also, not only have you just opened up a setup, consistently month in, day in, day out, आपको leads हमारे end से मिलती रहेंगी. Qualified leads, not just leads, but qualified leads. Leads और qualified leads में बहुत फर्क होता है. So if anybody is claiming कि हम आपको 10 lead देंगे, 40 lead देंगे, 100 lead देंगे, आप उनसे ये भी पूछिएगा कि वहाँ पे qualified leads हैं कि unqualified leads हैं. Because अगर unqualified leads ही देनी है फिर तो आपको हम 500 leads भी दे सकते हैं, उसमें कोई issue नहीं है. So leads that will convert and leads that will directly give you business, that will be coming to you month in, month out. And then there is a Crayo at home program as well. अगर आपके पास मान लो लॉकडाउन आ भी जाता है, आपका एक सेटअप है जिसका मंथ इन मंथ आउट रेंट जा रहा है, ऑब्वियसली आप ऑनलाइन क्लासेस तो चला ही रहे हो जिससे आपको स्ट्रेट अवे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. बट नियर बाय वी ऑल्सो हैव दिस Crayo at home program जहाँ पे आपके पास यू विल एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ पे विसिनिटी में जितने भी एक रेसिडेंशियल आपका एरिया है, नॉट जस्ट 5 किलोमीटर्स बट बियॉन्ड एज वेल, वहाँ पे यू कैन प्रमोट, वी विल बी प्रमोटिंग द Crayo at home program. एंड वहाँ पे आप कोई भी लीड्स जो भी कन्वर्ट करते हो, आपके पास Crayo बॉक्स रहेंगे जो आप डायरेक्टली पेरेंट्स को सेल कर सकते हो एंड उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट जीरो रहती है. यू जस्ट एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर. वंस यू सोल्ड योर मीडिया मार्जिन, यूर आउट. उसके बाद आपको ऐसा कोई सर्विसेज नहीं देनी है. द इंटायर प्रोग्राम इज हैंडल्ड बाय आवर इंटरनल एकेडमिक टीम एज वेल एज ऑपरेशंस एंड सपोर्ट टीम एज वेल. तो देयर आर मल्टीपल रेवेन्यूज टू अर्न फ्रॉम अगर आप Crayons फ्रेंचाइजी खोलते हो. And the best part is whether it's a pandemic situation or a non-pandemic में तो it's all sunshine. लेकिन अगर pandemic situation दोबारा भी आ जाती है, for example, at least you've got enough backups जहाँ पे आपका rent and operational expenses तो निकल ही रहे हैं, but you're still making some profit over and above as well. Quickly, this is 2021 at a glance. What we did was हमने अपना सारा entire curriculum revamp किया and not just because it's very easy. अगर आप बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हो तो बहुत आसान है, बट ऑनलाइन वही क्वालिटी एंड वही लर्निंग आउटकम्स डिलीवर करना, दैट्स द मेन चैलेंज. So you've got 500 worksheets that we had designed internally with our academic team. The head of academics is there, and there are consultants as well. And internally we've got a team of 4 to 5 people also who are working exclusively on the academic front. So we designed 500 plus worksheets which the parents घर पे बैठे बच्चों को बहुत आराम से करा सकते हैं. Then 1200 plus hours of live classes were conducted across pan India. That is one number that as a franchisee I'm most as a brand I'm most proud of. 1200 plus hours of live classes, not recorded but live classes. Then we had 500 plus parents across pan India. This is just the Noida. We are a Noida-based branch, Noida-based brand. So in Noida by itself, when we ran the online classes, we did a campaign pan India, and we were managing more than 500 plus parents, paying on average 3,500 to 4,000 rupees per month.
जनरली हमने देखा था, वी डिड आवर ओन मार्केट सर्वे एंड मार्केट रिसर्च. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स राइट नाउ, बट देयर आर प्री स्कूल्स जो साल के 5,000 से लेके 15,000 रुपए लेके बच्चे को पूरे साल का एक एकेडमिक इम्प्लीमेंट करके दे रहे थे. अब वो 5 से 15,000 के बीच में पूरे साल में क्या ही दे रहे थे, दैट गॉड नोज. But at least on our end, we didn't compromise on quality, and we also didn't compromise on the charges and the fees that we take. So despite a pandemic situation, आपके पास अगर मान लो 100 बच्चे हैं नॉर्मल एक स्कूल में, लेकिन आप पैंडेमिक के टाइम पे अगर आप 25 से 40 बच्चों के बीच में भी रह जाते हैं, obviously there will be digital marketing support provided by the brand also. So you will be having qualified leads to convert. But मान लो 100 में से आपके पास 25 से 40 भी रहते हैं, so 25-40 बच्चे भी अगर आपको ऑन एवरेज 3,500 या 4,000 भी दे रहे हैं, एटलीस्ट आप उस पॉइंट पे तो हो जहां पे आप वेरी इजीली सर्वाइवल का तो क्वेश्चन ही नहीं है, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ मेकिंग सम प्रॉफिट्स. सो एंड वीव गॉट द क्रेयॉन्स ई लाइब्रेरी ऑल्सो, देयर इज अ स्लाइड ऑन दैट इसके आगे, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस कैटेगोरिकली डिजाइन की हैं बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से. एंड वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मेनी टाइम्स ये होता है कि बच्चा मिडिल ऑफ द सेशन में आता है एंड पेरेंट का एक डिलेमा होता है कि पीछे का तो आता ही नहीं और आगे का भी आपको कवर अप करना है जैसे जैसे आपकी क्लास चल रही है. सो इन दैट केस व्हाट वी डू इज, ऑब्वियसली जो चल रहा है बच्चों को हम उस कोशिश यही होती है कि जल्दी से जल्दी हम उस स्पीड पे लेके आए. बट अगर पीछे का काफी सब्सटैंशियल कवर अप कराना है तो हम पेरेंट्स को रिकॉर्डेड सेशंस एंड रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनके पास क्रेयॉन्स ई लाइब्रेरी में, जहाँ पे दे कैन फॉल बैक ऑन दोज वीडियोस. एंड एज अ फ्रेंचाइजी ओनर आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, जहाँ पे आपके पास एक बना बनाया रिसोर्स पड़ा है जो आप पेरेंट्स को आगे एक्सेस दे सकते हो. एंड दिस इज अ रिसोर्स विच यू अर्न मनी ऑन. मतलब ये रिसोर्स आप फ्री में नहीं देते हो, ये रिसोर्स आप पेड बेसिस पे देते हो. तो दिस इज अनदर रिसोर्स विच बिकम्स नॉट अ बिग रिसोर्स, बट आई मीन नॉट अ बिग रेवेन्यू रिसोर्स, लेकिन आपके पास ये भी एक इनकम स्ट्रीम अलग से आ रही है यहाँ पे. Then I had touched these are the names of our classes: Poodles, Toodles, Mighty Explorers, and Mighty Grads. Starting from 1.5 to 5.5 की एज कैटेगरी में हम एडमिशंस लेते हैं अपने प्री स्कूल विंग में. आपके पास अगर स्पेस थोड़ी सी ज्यादा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 3,500 या 4,000 स्क्वायर फीट स्पेस है आपके पास, जनरली ग्रेड 1 and 2 भी अगर हम खोल रहे हैं तो वी कैन गो अप टू द फर्स्ट फ्लोर एज वेल. तो आपके पास जरूरी नहीं कि ग्राउंड फ्लोर 4,000 स्क्वायर फीट की स्पेस आपको चाहिए. अगर आपके पास क्यूमुलेटिव भी 4,000 स्क्वायर फीट है, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर मिला के जितना भी, तो यू कैन ओपन grade 1 and 2 as well. And with the Crayons School, unlike other brands are not giving you a continuation within the same franchisee access to grade 1 and 2 also. Crayons, from my understanding, as of now, is the only preschool brand which is also giving you the option to open grade 1 and 2. तो आप सिर्फ 1.5 से 5 साल के बच्चों को केटर नहीं कर रहे हो, आप 1.5 से 7.5-8 साल तक के बच्चों को केटर कर रहे हो. एंड बच्चा जैसे ही ग्रेड 1 and 2 में आता है, पहला क्वेश्चन पेरेंट का ये भी रहता है कि फॉर्मल स्कूल में एडमिशंस कितने आसान रहेंगे या कितनी आसानी से हो जाएंगे, उसमें कोई इशू तो नहीं आएगा. सो जहां भी आपकी फ्रेंचाइजी खुलती है, चाहे आप Tier 1 में हो या Tier 2 में हो या जैसे भी हो, we've got our senior management team and we've got our marketing team as well. They will go to the nearby schools and they will meet the management over there. They will explain the concept and the entire business proposition, and they will tie up with nearby formal schools for you. So आपके पास एक अश्योरिटी रहती है पेरेंट्स को देने के लिए कि बच्चा अगर ग्रेड 1 and 2 में कंटिन्यू भी करता है, and in any which case new education policy में early childhood is from pre-nursery till grade 2. So it's not as if कि हम कुछ नया मार्केट में इनोवेशन लेके आ रहे हैं. This is something that the government is implementing now across different states. तो this should not be an issue, and आपका जो target audience है वो अपने आप ज्यादा हो जाता है to get more revenue. Now this is the Crayons daycare program. The Crayons Care is our brand name, and it's the daycare wing of the Crayons. आपके पास full daycare का option भी रहेगा. You'll have the after school care and the emergency daycare also. The best part is daycare is a slightly risky propositions, जिसकी वजह से existing जितने भी brands हैं वो इस segment के अंदर enter करते नहीं हैं. Because daycare requires a slightly high level of training, slightly high level of vigilance, and in 2021 generally the gold standard is कि आप live CCTV access दे रहे हो parent को 24/7 in the sense जब तक बच्चा स्कूल में है आप parent को live CCTV access दे रहे हो. जैसे ही आप live CCTV access दे देते हो तो एक certain standard आपको maintain करके चलना पड़ता है, जो कि बहुत सारे existing brands, despite their R&D, despite their decades of being in business,
वो उसको implement नहीं कर पाते हैं branches में. So this is something that we are very very proud of, that the Crayons care by itself, अगर आप खाली डे केयर भी रन करते हो in a locality which has a lot of nuclear families, by daycare itself you will be able to earn much more than what a typical preschool earns in a concentrated market. So you will have all these options, and हम आपको सारी guidance and support and सारा एक framework रहता है, and framework multiple चीजों पे रहता है, whether it is safety and security, whether it is health and hygiene, whether it is activities जो हम daycare में करेंगे, जो हमारा infrastructure भी setup होता है daycare का, it has certain protocols and provisions as well. So that entire program is structured in a very proper manner, and that gets implemented जहाँ पे भी आप अपना एक center खोलना चाह रहे हो. This is Creo at home. This is a subscription box, जैसे हमने आपको बताया था. अगर pandemic आ भी जाता है, at least you have some hardware product to sell, wherein you act as the franchisee owner, you act as the distributor for us, and nearby जितनी भी franchisees हैं, जितने भी B2C सेगमेंट है या जितना भी रेसिडेंशियल एरियाज है, अगर पेरेंट्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वेल एंड गुड. दूसरा एक एप्रीहेंशन पेरेंट का ये भी रहता है कि स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बढ़ रहा है, अब क्या करें, स्क्रीन टाइम मुझे इतना नहीं करवाना, हर रोज मुझे 1-1.5 घंटे की लाइव क्लास नहीं करवानी है. In that case, you still have some solution to provide to parent, जहाँ पे आप Creo box sell कर सकते हो, and as a distributor you can earn margin on the product and product itself as well. This is again the Crayons Academy, जहाँ पे हम ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज की हम बात कर रहे थे. These are all the different courses, जहाँ पे whether it's phonics is a very popular course, particularly between 2 to 5 years of age. यहाँ पे you have a lot of market out there, and this course by itself sells for roughly between 20 to 40,000 rupees. So अगर आप टीचर की एक कॉस्ट निकाल भी दो, तो there is a very handsome margin. अगर आप एक 15-20 बच्चों का भी एक बैच बना लेते हो, just on the course of phonics, there is enough for you to earn as well. There is English grammar, instruments, chess, classical, semi-classical, yoga and meditation, Bollywood dance, Western dance, Vedic maths. ये तो 9 courses हैं जो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं. In totality, there are a lot more other courses as well which we are planning to launch. And the best part is generally preschool market में आप 3 बजे स्कूल बंद कर देते हो, मतलब बच्चे 1:30 बजे चले जाते हैं, टीचर्स के साथ आप 3 बजे स्कूल बंद कर देते हो. एंड अगर आप एक रेंटेड प्रीमाइस में हो, रेंट ऐसा नहीं है कि आप आधे दिन का ही दोगे, आप पूरे दिन का ही दोगे. इनफैक्ट यू विल पे द रेंट फॉर 30 days. तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 3 बजे के बाद आइडल पड़ी हुई है. सो एटलीस्ट विद द Crayons, एटलीस्ट यू हैव द Crayons डे केयर, अगर डे केयर की मार्केट है वहाँ पे. अगर डे केयर की मार्केट नहीं भी है, इन टुडेज टाइम्स पेरेंट अंडरस्टैंड्स कि बच्चा सिर्फ मतलब क्लास के अंदर टॉप करके अगर मैं सोचूं कि आज के दिन में काम चल जाएगा, तो दैट बाय इटसेल्फ डज नॉट सफाइस. एंड क्लास में एक ही टॉपर हो सकता है, क्लास में 40 टॉपर नहीं हो सकते हैं. सो हर बच्चा टॉपर नहीं होता है. तो टू गिव सम काइंड ऑफ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, सम काइंड ऑफ स्किल, दीज काइंड ऑफ कोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज कोर्सेज विल ऑल्सो बी मार्केटेड, एंड प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन मिलेगा साथ में. ये ऐसा नहीं है कि हम हॉबी क्लास की तरह रन कर रहे हैं. These will be proper certification classes with a proper curriculum, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर तरीके से आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी. एंड जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जितने भी whether it's on a local level या state level, our goal and idea is that अगर हम बच्चे को डांस सिखा रहे हैं, तो डांस में इस लेवल तक पहुंच जाए कि वो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में भी या नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम compete करने के लिए कर सकते हैं. So these will be proper certification courses, and I think there's a lot to discuss just in the academy aspect, but we can separately, if you're interested in the academy scheme of things, we can separately have a one-on-one Zoom session and we can discuss कि इसमें क्या-क्या चीजें हैं. So this is something that Priyanka ma'am had touched as well. हमारा curriculum is based on 7 intelligences. A lot of preschools they claim that they're working on 7 intelligences, but अंदर क्या चल रहा होता है, it is just ABCD and 1 2 3 4. So ultimately it depends on the franchisee. As the brand owner, obviously we provide each and every single assistance on इन सब चीजों पे कैसे काम करना है. But having said that, at the end of the day, a lot will depend on your motivation also. आप अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, आइडिया यही रहना चाहिए कि कोई भी बच्चा आपके पास आता है, आप हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप दे रहे हो. तो उसका जो नो हाउ है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, that is something that you will consistently get every single month from our end.
And if there is any issue, if there's any doubt, there is a 9 to 5 number that will be provided to you. There'll be a dedicated relationship manager that will be provided to you. So at any point in time, you can schedule a call from an academic support perspective and marketing support and operation support and all these things. ये आपको सारा मिलेगा. These are the 5 learning dimensions which we work on with the children. Now coming to why parents love us, intentional teaching is something जो इंडिया में अभी तक किसी ने भी implement नहीं करी है. And intentional teaching का फर्क आपको 1 या 2 महीने में over a period of 1 year जब parent अपना बच्चा स्कूल में रख लेता है, by default the parent understands कि नहीं, with my child the school has forged a very special relationship. And बच्चे का वो जब देखते हैं कि 1 साल में grow किया है, by default word of mouth spreads and आपको in-house references आने शुरू होते हैं. So that is the best marketing strategy. अगर आप word of mouth ही अपने क्वालिटी आप इतनी अच्छी रखोगे, वर्ड ऑफ माउथ से आपको 80% आपका जो स्ट्रेंथ है वो फिल हो जाए, तो that's the most ideal way. Then there is a structured learning program. ऐसा नहीं है कि बस चल रहा है कुछ and fortnightly expert support is also there for the parents from the counselors side of it as well. Then why students love us? The content is very fun and engaging. ऐसा नहीं है कि बहुत ही heavy academically रखा हुआ है. And a lot of activities are there. And अगर बच्चा Creo box भी ले रहा है, तो there is the excitement कि कुछ नया आएगा next month, and we'll see to it how it comes across. Now these are, I would quickly want to touch the support factor, because ultimately आप जो भी franchisee ले रहे हो, whether it's a very established brand or a non-established brand, end of the day जो आपको internal अपनी research करनी है या questions पूछने हैं आपको franchisee owner से, वो ये है कि आप ये कैसे confirm करते हो कि हमें जब हम फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो आप सपोर्ट कितना दोगे और कैसे दोगे और किस कंसिस्टेंसी के साथ दोगे. So these are the multiple things on which you will get the support at, whether it's software, stationery, marketing, branding. There will be visits and audits from our side as well. Now audit, एक financial audit भी होता है to guide you on कि आपने एक preschool तो खोल लिया है. Generally होता क्या है कि आपने 15-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन आप हर साल आप उतना खर्च कर रहे हो जितना आप कमा रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट अगर ब्रेक इवन पे 5-10% ही चल रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट टू दैट. सो जो इंटरनल एक्सपेंसेस हैं वो कैसे बेस्ट मैनेज करने हैं, वो कैसे कर्टेल करने हैं, एंड हाउ टू ग्रो योर बिजनेस फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट, audits will be there for that, whether it's marketing, financial and academics as well, and all this support will be provided. Now to deep dive into what is there in all this support, फ्रॉम अ ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव, आपको एक अपनी वेबसाइट मिलेगी. जनरली आप किसी भी प्री स्कूल फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ते हो तो आपको वो इंडिविजुअली प्रमोट नहीं करते हैं, वो अपना ब्रांड ही प्रमोट करते हैं. एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन में वो ब्रांड ही प्रमोट करते हैं. वो आपकी स्पेसिफिक फ्रेंचाइजी इतनी एज अ ब्रांच प्रमोट नहीं होती है. तो उसके अंदर ये रहेगा दैट यू विल हैव योर ओन Crayons branded website, जहाँ पे if anybody is searching top preschools and best preschools in, let's say for example आप किसी सेक्टर 100 में रहते हो, तो अगर कोई सर्च कर रहा है top preschools in sector 100 नोएडा या top preschools in वसंत कुंज या top preschools in whatever locality you are, तो जो आपकी वेबसाइट बनेगी we will be doing the SEO on that and it will be there in the top searches. तो आज के दिन में कोई भी पेरेंट पहले ऑनलाइन अपना सर्वे करके आता है, उसके बाद आपके पास एडमिशन काउंसलिंग रूम में बैठता है. So we will be giving you not just, Crayons की एक branded website तो अपनी जो है वो तो है ही है, but we will be giving you your own website also. Then all your social media will be taken care of. We'll be providing you all those social media pages. It's not necessary as a franchisee owner आपके पास digital marketing का सारे know-how हो. So not only do we have an internal digital marketing team, ऐसा नहीं है कि हमने ये चीज़ outsource की हुई है. This is something that's there in-house in the head office. You will also get support कि campaigns कैसे manage करने हैं. Campaigns भी internally हम ही manage कर रहे होंगे. It's just that आपको छोटे लेवल पे जो भी सपोर्ट चाहिए होगा from a digital marketing perspective, that will be provided. So all these stationery items, the business cards, pamphlets, print media, logo and mascot, all these things you don't need a designer. आपको कोई designer outsource करने की जरूरत नहीं है. Festivals पे you need to send promotional content. मान लो moment marketing भी होती है. Let's say something happens which you as a business owner want to capitalize on. So all those things, there's a separate marketing team which works continuously day in day out, and all this support will be provided to you. Then this is the exhausting marketing support. Like I said, footfall जो आपके पास अपने आप आ जाएगी locality के अंदर से, वो तो एक है ही है. But apart from that, हम marketing, digital marketing से कितनी leads लाके कितना convert कर रहे हैं, at the end of the day, आज जो market है,
people have switched to a lot of things online. अब वो grocery चाहे order करना हो या कुछ इनफैक्ट कपड़े शॉपिंग भी जो है हमारी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है टू क्वाइट एन एक्सटेंट. हम जितना भी आईटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं दैट हैज स्विच्ड टू अ लॉट ऑफ ऑनलाइन थिंग्स. सो आज के दिन में ऑनलाइन प्रेजेंस इट्स ऑलमोस्ट अ मेक और ब्रेक. तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी अच्छी है विल डायरेक्टली डिफाइन कि आपके पास ऑनलाइन से कितनी लीड्स आ रही हैं और वो कन्वर्ट हो रही हैं. सो विल बी डायरेक्टली वर्किंग ऑन दैट थ्रू योर वेबसाइट. All these advert designs will be provided from our side, and post launch and pre launch. प्री लॉन्च में भी हमारे पास 2 से 3 महीने का टाइम रहता है. पोस्ट लॉन्च तो इनफाइनाइट टाइम है ही है. सो प्री लॉन्च में भी एक हाइप कैसे क्रिएट करनी है सो दैट बाय द टाइम जब आप लॉन्च करो तो यू हैव अ बेस ऑफ 10, 20, 30 स्टूडेंट्स टू स्टार्ट ऑफ विद. दैट मार्केटिंग स्ट्रेटजी विल आल्सो बी प्रोवाइडेड एज पर द लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में आप हो. Now this is exhaustive IT support. Prior to joining Crayons, for almost 3.5, 4 years, I was working on building IT products specifically for the early childhood segment. This is something that I've solved day in, day out. There's and trust me, जब आप not only tier 1 cities and metro cities में हो, आज के दिन में the parent is tech savvy, everybody has a smartphone in their hand, and ultimately there is a huge difference between let's say for example an ICICI bank, जो जितने भी हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, या जितने भी फॉर एग्जांपल आप एक मैकडॉनल्ड्स में जाते हो या हल्दीराम्स में जाते हो, वीजा भी जब आप एक किसी ढाबा में जाते हो तो आप वहीं पे एक आपको डिफरेंस दिख जाता है आईटी के अंदर. आप अगर आज के दिन में मैकडॉनल्ड्स या हल्दीराम्स में जाते हो तो आपकी सीट पे एक क्यूआर कोड होता है. उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हो जिससे सारा मेन्यू आपके पास आ जाता है. आप वहाँ पे सीट पे बैठे बैठे आइटम्स ऐड करते हो, वहीं से ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड से पे करते हो, एंड आपका एंड टू एंड सारा ऑर्डर भी मैनेज हो जाता है और बैठे बैठे आपके पास सीट पे आपका ऑर्डर आ जाता है. सो सीमलेस आईटी एक्सपीरियंस. Every business आज के दिन में there is a requirement for this, and this kind of IT support will be provided. So सारा आपका database will be managed on the IT support that we will be giving you, on the ERP that we will be providing you. ERP की training, we'll have our own internal team who will be providing it to your teachers and to your admins, to the principals and to the owners also. You will have a dashboard as well जिसपे आप सारी चीजें end to end देख सकते हो कि क्या status है क्या नहीं है. Your fees, जब आप स्कूल स्टार्ट करोगे you'll realize managing the fees by itself is 20% of the headache. तो वो सारी फीस आपकी हम ऑटोमेट कर देते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स बस ऑनलाइन पे करते हैं, एंड ऑनलाइन आप पेटीएम, गूगल पे, देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस. लेकिन जब एक ही ऐप पे आपके पास 100 चीजें होती हैं जिसमें से एक चीज फी पेमेंट भी है, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो ऑल दीज थिंग्स विल बी वेरी इजीली मैनेज्ड, एंड द एंड टू एंड ट्रेनिंग विल आल्सो बी प्रोवाइडेड जिसमें आप ये चीजें सारी देख सकते हो. फ्रॉम अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, जैसे ही पेरेंट एंटर करता है स्कूल के अंदर, on the gate itself OTP वेरिफिकेशन के थ्रू वी कंफर्म दैट हमारे पास सही डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दैट इज वन पॉइंट ऑफ डेटा कलेक्शन. उसके बाद एक फोटो कैप्चर होती है बकायदा, एंड द नेक्स्ट टाइम जब वो सेम पेरेंट आपके स्कूल में आता है तो फ्रॉम फेशियल रिकग्निशन इटसेल्फ कोई OTP वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो फेशियल रिकग्निशन हुआ एंड ऑटोमेटिकली पेरेंट एंटर्स. देन बच्चा जब फ्रॉम स्कूल टू होम या होम टू स्कूल कैब में आ रहा है, एज अ पेरेंट मेरे पास एक लाइव GPS ऐप के ऊपर एक ट्रैकिंग है जहाँ पे मैं बच्चे को ट्रैक कर सकता हूँ बच्चा अभी स्कूल पहुंच गया या नहीं पहुंचा है. एंड जैसे ही बच्चा स्कूल पहुंचता है, आई कार्ड के पीछे देयर इज अ QR कोड. वो QR कोड स्कैन होता है एंड ऑटोमेटिकली द पेरेंट गेट्स द नोटिफिकेशन कि बच्चा स्कूल में इस टाइम एंटर किया है एंड इस टाइम स्कूल से निकल गया है. पर्टिकुलरली यूजफुल जब पेरेंट ऑफिस में बैठा है एंड काम है सारा, एंड बार बार स्कूल को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है बच्चा पहुंचा या नहीं पहुंचा. ऑटोमेटिकली आपके पास एक QR कोड बेस्ड ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम है, एंड यू एज अ पेरेंट एटलीस्ट देयर इज ईज ऑफ यूज. इन सब चीजों को मैनेज कैसे करना है, ऑल दैट ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू यू गाइस फ्रॉम हेड ऑफिस एज वेल. नाउ दीज आर द की मेट्रिक्स. आपको कितनी लीड्स पर मंथ आ रही हैं, कितना रेवेन्यू आ रहा है, आपकी कितनी इनवॉइसेस पेंडिंग है. फ्रॉम अ ब्रांच हेड पर्सपेक्टिव, आपकी जो ब्रांच हेड हम आपको हायर करके दे रहे हैं, या आप अपने एंड पे लोकेलिटी में जो लेट्स से यू हैव योर ओन रेफरेंस, तो आपने जो हायर की है, व्हाट इज द एवरेज डिस्काउंट एज अ ब्रांच हेड दैट शी इज प्रोवाइडिंग टू पेरेंट्स. लीड कन्वर्जन रेशियो कितना है आपके पास. अगर 100 लीड्स आ रही हैं, क्या आप उसमें से 20 लीड्स कन्वर्ट कर रहे हो या 40 कन्वर्ट कर रहे हो. 20 और 40 में जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है. एंड बिफोर वर्सेस आफ्टर ड्यू डेट फीस कितनी आ रही है. अगर
अल्टीमेटली कैश फ्लो अगर आराम से मैनेज करना है तो टारगेट इज दैट 10 या 12 तारीख से पहले पहले स्कूल की सारी फीस आ जानी चाहिए। लेकिन कितने बच्चे लेट दे रहे हैं, परपेचुअली लेट दे रहे हैं, वो सारा डेटा एनालिटिक्स हम लोग अपने एंड पे रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। एंड दिस डैशबोर्ड इज प्रोवाइडेड टू यू सो दैट वेरी इजीली एज अ ओनर आप स्कूल में आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे हो, आपने मान लो हो सकता है आप प्रिंसिपल हायर करी एंड आप घर पे बैठे बैठे एक ट्रैक रखना चाह रहे हो, हफ्ते में आप 1-2 दिन चले गए जस्ट टू सी कि क्या चल रहा है, बट आपने वैसे ही बिना फोन किए आपने बस देखा है, आपके पास एक ऑटोमेटेड डेटाबेस सिस्टम है जहाँ पे आप ये सारी चीजें आराम से ट्रैक कर सकते हो। Now you can open your preschool in 60 days. Ideally 2 months का एक time frame हम लेके चलते हैं. This can be 1.5 months also. This can be 2.5, 3 months also. Totally depends कि हम कितना बड़ा project या कितना छोटा project plan करना चाह रहे हैं open करने का in our locality. So it starts off with the inquiry. I mean you can directly reach out to us. हम आपको phone numbers and mail ID share करेंगे अभी. One-on-one एक core business team के साथ एक meeting required होती है because एक 5 किलोमीटर लोकेलिटी के अंदर ही या मान लेते हैं 20 किलोमीटर लोकेलिटी के अंदर ही डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आप स्कूल खोल रहे हो, सारी स्ट्रैटेजी ही चेंज हो जाती है ऑफ लॉन्चिंग द प्री स्कूल। सो डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर या इनकम, a lot of things changes and ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आपके पास 20 लाख रुपए पड़े हैं तो जबरदस्ती 20 लाख खर्च करवा दो। अगर स्कोप है कि हम 10-12 लाख में स्कूल खोल सकते हैं, एंड ग्रेजुअली एज वी स्टार्ट गेटिंग कैश फ्लो तब हम बाद में एक्सपैंड कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस, इट्स नॉट अ वन टेम्पलेट की टेम्पलेट आपको दिखाया और चिपका दिया। डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक केस आप कहाँ प्लान कर रहे हो खोलने का, द कोर बिजनेस टीम विल गिव यू अ प्लान एंड देन वी विल लॉन्च इट। एंड देन द preschool location is finalized depending on आपके पास rented property आप plan कर रहे हो या फिर self owned property है। The agreement is signed, the setup of preschool and training happens, and then we give you a pre-launch and a post-launch plan as well, and the inauguration is also something that we do it for you. Now this is the payment breakup. Now this is something that you can take a screenshot if you want, you can take a photo if you want, and we can discuss it in detail on one-on-one as well. But to give you a very quick brief overview, what investment will go into starting a preschool will also vary from tier 1, 2 and 3 as well. Because जितना आप एक capital city में या tier 1 city में आप spend करोगे, you will have to spend more in the infrastructure, because अगर आपका competition ही ऐसा है जिसने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहां पे अगर आप उसी विसिनिटी में मतलब अगर आप एक प्री स्कूल खोलते हो जहाँ पे आपने सिर्फ 5, 7, 10 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं, तो इन दैट केस देन इट विल बी वेरी टफ टू बीट योर इमीडिएट कंपटीशन जो ऑलरेडी वहाँ पे 2, 3, 5, 10 साल से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस द इन्वेस्टमेंट विल वेरी। हैविंग सेड दैट, मान लो आप जैसे टियर 2 या 3 सिटी में हो, तो वी डू नॉट रिकमेंड कि आप 15-20 लाख रुपए खर्च करो वहां पे, बिकॉज वहां पे वी रिकमेंड जनरली यू स्टार्ट कंजर्वेटिवली and then gradually जब आपके पास cash flow आना शुरू होता है and you become profitable, then we can expand and increase our foothold as well. So this is the expense overview. To begin with, आप लोग एक 50,000 का blocking amount आप pay करते हो, it's a non-refundable amount, जहाँ पे आपकी as a team we sort of अगर तो आपकी खुद की property है तो we do the survey for you and then book it for you. अगर आपकी rented property अगर आप देखना चाह रहे हो, आपके mind में है, तो we will see to it की population density and average income capacity क्या है क्या नहीं, and finalize the location. Otherwise आपके पास अगर locality है लेकिन एक specific rented property fix नहीं है, तो we have the internal team wherein they find the locality for you and within that locality आपको एक rented property हम finalize करके देते हैं। Second payment, post location approval and agreement sign up, you have to clear this thing because we also have to pay in advance to the vendors जो आपको सारा furniture setup करके देंगे and they will set up your infrastructure premises and all these things. And the third payment that has to come, that is before the material gets dispatched. So this is something that you have to pay in 3 installments. You don't necessarily have to pay the entire amount in one shot. And what this does is कि आपको भी थोड़ा सा एक confidence रहता है that against our investment क्या क्या हो रहा है, क्या क्या दिख रहा है, वो ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर भी होता रहता है, आपको दिखता रहता है कि अच्छा दिस इज वेयर माय इन्वेस्टमेंट इज गोइंग, राइट। एंड प्रायर टू स्पेंडिंग इन एनी विच केस विल बी शेयरिंग द डिटेल्ड प्लान। ब्रेक इवन की अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी आप बिजनेस में पैसा लगाते हो डे 1 पे तो आप सारा पैसा रिकवर नहीं कर लेते हो, बट प्री स्कूल एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे विद इन जैसे ही आपका दूसरा साल स्टार्ट होता है एंड बाय द टाइम दूसरा साल एंड होता है, आप एटलीस्ट इतना कमाना शुरू कर रहे होते हो कि आप
पैसे डाल नहीं रहे हो, आपका बिजनेस ही अपने आप पैसे डाल रहा है एंड उसमें से आप कुछ निकाल भी रहे हो। एंड बाय द टाइम जब आप तीसरे साल में आते हो, तीसरे साल के एंड तक आप इतना कमा चुके होते हो कि मोटा मोटा 80% ऑफ योर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, जो आप अपफ्रंट कैपिटल में लगाते हो इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा आप रिकवर कर चुके होते हो। तो our target is that by third year, end of third year, आप 80%, 75% to 80% अपना जो investment है वो आप recover कर चुके हो। And immediately when the fourth year starts, within the first 2 quarters, you've recovered your entire investment, and pure profit, whatever it is that you're earning from that point, is just pure profit coming into your kitty at that point. So this is a glimpse. I mean, हमारी classrooms, like I said, अगर आप tier 1 city में हैं, अगर आप metro city में हैं, you will have to invest slightly in the infrastructure, and that infrastructure will obviously drive up the costs. So this is a sample or a glimpse of the classroom. Generally हम शुरू में 3 classroom setup करते हैं, pre-nursery, nursery and KG, and this is although a very big hall, but आपके अगर एक हम normal classroom भी setup कर रहे हैं, तो it will be based on the same themes. Now this is the marine theme that we are looking at right now. Theme-based classrooms are generally designed depending on pre-nursery, nursery and KG. And you can see that as a parent, अगर आप इस school में घुसते हो और and you see that the fee is value for money, you'll take it. There's no two ways about it. So this is a glimpse of the theme-based. Now this is the jungle theme that you're looking at. I mean, so different themes, different classrooms. I would love to take some questions. If you have any questions on the current scenario, current market scenario, pandemic, post-pandemic,